So we'll start the discussion for the essay class. Now before starting with today's topic, okay, you can refer to your handouts. So the topic for today's essay is India's demographic dividend, opportunities and challenges. Yes. So before going to the topic, let me tell you what is to be done in an essay. And if you are going for UPSC, you know that it is 250 marks, okay, and for PSC it is around 200 marks for Odisha Public Service Commission, okay. And we would generally expect, okay, good marks in the range of at least 50% to 60%, okay. Even students score more than that, but 60% is, well, in a sense acceptable, right? So what are the things which you have to remember while writing an essay, okay? So for our purpose, working definition of essay, now essay is an, okay, rational amalgamation of opinion and facts, okay. So there are two aspects to every essay, that is opinion and the facts. If you write an essay only with opinion, that becomes a kind of sermon, okay, or preaching, okay. If you write only facts, it becomes a report. Essay has to be balanced. You have to write it in such a way, okay, whatever you are trying to say has to be, okay, properly backed up by data, okay. And the data should be verifiable data, means let's say from general sources, Planning Commission, okay, National Crime Record Bureau, right? These kind of data which can easily be, okay, Niti Aayog and all. So those verifiable data, not like, you quote some journal, okay, which no one has heard of, and you write and you quote something from it, okay. So the data that you will be giving should be from standard sources, okay, and it should be known data, common data. It should not be like, from some corner of some research book you have brought out some data, because it would be difficult to verify it, okay. For example, you are talking about economic progress. So what is the outlook that the World Bank has given? What is the outlook that Niti Aayog has given? What is the outlook that the lending credit agencies have given? Okay, those things you can write. Getting it? So structure of an essay, basically you know that introduction, body and the conclusion. Introduction of the essay is the most important part. Some people like to start the essay with a quotation and all. It's not bad, but then it has to be relevant, okay. It has to be related to the topic. It should be of some meaning. Just for the sake of, okay, giving a quotation, if you quote, it will be of very little use, okay. Rather it may, your marks may be deducted for that, right? So some cardinal principles of writing essay. First, number one, simplicity, okay. So simple writing, yet lucid, to the point, okay, but simple. Do not use a lot of ornamentation. Some people think that if I write it, if I use my vocabulary, okay, then it is, very strong vocabulary, then I will get more marks. That is not the case, okay. That is not the case. So simpler the essay, more would be your marks, okay. And how you are arranging the essay, that is also important. So simple and lucid. Second thing that you should remember for a good essay is, the flow has to be, okay, continuous flow of thoughts. It should be written in a cohesive manner. So cohesion, just like water flows, okay, in a river.
Otherwise, if you know, if the reader gets a feeling that paragraph 1 is written by one person and paragraph 2 is written by another person, so then in that case your marks will suffer. So it has to be cohesive. Okay, where the one paragraph ends, second paragraph takes over. Okay, connection has to be there. Third, balanced. What do you mean by balanced? Balanced essay is basically, okay, see, it's not a debate competition where you have to say in favor or against anything. Okay, so both sides of the coin have to be highlighted, and then a nuanced approach has to be taken. Okay, so that you find the solution or resolution. Okay, it always, the essay's tone has to be pragmatic. It should always, okay, look at that, even if it is a problem, okay, it should always look at that silver lining, okay, in the cloud. So should be pragmatic in tone, or optimistic in tone. It should not be pessimistic. That, let's say, poverty, corruption, if you use statements like corruption has become a part of our life and it is very difficult to, you know, end corruption and all, right? Corruption may be very deep rooted, but then your attitude, your tone of the essay has to be pragmatic. It has to be, okay, on a positive note, that what can be done to eradicate it, okay, that you have to see. Next, no, you can say harsh, okay, or vitriolic comments should not be there. Okay, then avoid biases. Any kind of bias, maybe political bias, maybe religious bias. Okay, you may have your own personal opinion, that's a different matter, but for civil services, okay, it has to be a nuanced essay. Okay, you should avoid bias, right? For example, if you say that X party is a corrupt party, okay, or X government has not done anything, okay, so don't do that. Rather than constructive criticism is welcome. Okay, so suppose a particular scheme has not been implemented properly, what you can do is you can write like, so these following steps would have improved the performance of the scheme, rather than saying that the scheme was very poorly implemented, right? Same thing you are saying, okay, but it has to be presented in a more diplomatic manner. Okay, you are not expected to be a revolutionary, you are expected to be a civil servant, so you have to work under the framework of the constitution. So whatever you write, think about that. Okay, you may have radical views, really, I mean, that really does not matter much in essay, but here when you are what you are writing, that should be, okay, according to these rules. So if you have any bias, personal bias, that you keep with you, don't you know, bring it to the essay paper, right? Then see, the essay has to be multi-dimensional. Okay, you have to touch various dimensions. That is also true for the GS papers. Rather than explaining and elaborating on 3 points, you try to write 10 points, okay, with the relevant explanations, right? There are some people who are maybe short of points or something. They will keep on beating around the bush. Sei jinso taku khali bhasha badali ki alga alga, okay, kintu matter ta same. Sei jinso ta kହୁचंदी alga alga taku, okay, bhasha badali kହୁचंदी किछि लाभ होबन सेतरे. ठीक अछि त. तेनु आपनक पाखे जदि 5टा पॉइंट अछि सेति के लेखंतु, किंतु भलर लेखंतु. ठीक अछि त. So do not repeat, do not beat around the bush. Okay, so avoid redundancy and beating around the bush. Okay, so points jitiki debe, proper debe, examples debe, and if you see, many toppers have said that they have even used figures in essays. Okay, so diagrams karika essay re apan use kari paribe, kichi asubidha nahi. Those things can be used. Essay
Many people say that it should be written in a paragraph manner. Not necessarily. Heading, subheading and point manner रे भी ऐसे लिखी होगा better marks मिली बस इधर. ठीक है तो सब गुड़ा अपनों को देखी बार अच्छी. So next thing that we need to understand here, okay, when you are writing an essay is the time division. 3 घंटा मिलुची UPSC रे भी OPSC रे. Okay, how do you divide that time? So 3 hours रे first 30 minutes 15 to 30 minutes upon kichita. Once you write 20-30 essays, then you can do this in 15 minutes. Initially you take 30 minutes, not an issue. Okay, so the first 30 minutes you have to make a rough sketch of your essay. Generally you will get topics which you know, and what happens in the exuberance, you will forget many points if you don't, okay, jot down the points. So once you see the topic, you choose the topic, which topic you want to choose, and then you jot down the points. This would be my major point. Under these 3 minor points would be there. Okay, that kind of structure you should make, so that even if you forget flow रे आपण भूली भी गले तो सेटा देखि कि जाना पड़ जो हां ये 4टा पॉइंट लिखिबार थिला. सो जेमति प्रेसी रे आपण करचंदी गोटे रफ प्रेसी जहार भलो हैला फेयर टा तारो बेटर हबो. से हिसाब रे for an essay you have to write a rough essay. Okay, the points have to be written. ठीक अछि तो अब सही पॉइंट skeleton सही skeleton ऊपर you will build your essay. So सेटा जदि खराब हैला किंबा some people think that they are सेते brilliant अछंती कि से सीधा essay लिखिया स्टार्ट कर दियंती, तो you may miss some points. Okay, किछ points भूली गले टाइम हे गलानी important point 4टा छाड़ देले तो ताको फर्स्ट गोटे तारा आउटलाइन कर दियंतु essay रो आउटलाइन टा. Then you will never forget, okay, what is to be written. लिखिए ताको होंगे नहीं. So take that into consideration. बुझी पाले सेटा आपण भाबी के करे. Only way of improving your essay writing is by writing an essay, at least one essay per week. तो वर्ष रे 52 टा essays आपण लिखुचंदी ना, sufficient सेटा. Okay, you cannot directly start writing a 3-hour essay. First start writing 1-hour essays, then graduate to 3-hour essays. Hela aste aste समय लागियो एका संगे कि संगे संग किछि हेचियो. Getting it? So now let us go to today's topic. Just go through your handouts. India's demographic dividend, opportunities and challenges. Okay, first line is the punch line. Okay, এটা model essay टा. Obviously कोनोसी पिला तो एमिति लिखि परिबेने सेटा, एमिति लेखा जिबा कथा, सेतिमे model essay टा दिया हिच. Okay, you are not expected to write like this. Okay, no one can write like this, right? Model essay it is given like so that you know that okay, this is the structure. अपन देखिले फर्स्ट सेंटेंस टा that sets the tone. ठीक है तो पंच लाइन जेमति मारला हळिया गोटे पंच मारची सेठी. ओके कोन 21st century can belong to India as it has 3 assets that no country has: democracy, demand and demographic dividend. हैला तो एमिति हमको सब गोटे पंच लाइन मिली जीवो सेमति माने नहीं, बट देन स्टार्टिंग लाइन जेमति कि मॉर्निंग शोज द डे. ओके, ये फर्स्ट लाइन टा जहार टिके प्रॉपर हैला तो बाकी टोन ऑफ द एसे इज सेट. ओके, सो democracy, demand and demographic dividend, and just like your GS paper you will underline those 3 keywords. ठीक अछि ता माने कोन एबे एसे रे मु आ ऊपर ही फोकस करी बेसिकली, राइट. तापर इंट्रोडक्शन देला. ठीक अछि, what is demographic dividend, right, that it has given. Okay, e-learning students, those who are watching the video, you can find this in your student management system. Under assignments it would be there. Okay, essay you can just download the PDF. Okay, so introduction dela page 1 re. Okay, come to page 1. So what a basic, it is not a technical definition, what a working definition dechi, right. Tapare next meaning. Okay, and the content जो देइछि page 1 रा. Okay, it is said to be in demographic dividend phase when majority of the population is in working age group. economics रा already आपण पढि छथि. Okay,
age pyramid shows a bulge in the middle portion, right? So go through that. एटा मॉडल एसे इन द सेंस दी एठी जहाँ लिखाई एटा तो असंभव कि सब आप लिखे आपको थे पढ़ला दोज हु आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू ट्राई टू राइट अ 1 hour एसे जो मैंने किसटा एसे लिखुंट यू ट्राई फॉर 2 or 3 hours एसे ठीक अच्छे तो 3 घंटा के बसिक एसे लिखती तो प्रिपरेशन प्लानिंग रे हाफ एन आवर खंडे पड़ेगा ओके एज्यूमिंग दैट यू राइट 1 A4 पेपर इन 6 minutes ताहले आपणकर तो 2 घंटा ऊपर को बढ़लान 2.5 hours बढ़लान ओके ऑल्दो पेजेस हैव नथिंग टू डू विथ द मार्क्स दैट यू सिक्योर बट जिते मल्टी डायमेंशनल एसे हम ओके सेटा इंपोर्टेंट आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस फर्स्ट कह भूली गली दैट इज सिलेक्शन ऑफ एसे आप 5-6टा चॉइसेस अच्छी भर गोटे एसे चूज करेंगे ओके यू अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल स्ट्रेंथ यू चूज द एसे करेन्ट अफेयर सोशल इश्यू पॉलिटिकल इश्यू यही टाइप एसे जोड़ा प्राय आप पढ़ी थे तेणु सहज हुए ओके टॉपिकल एसेज आसे जोटा कि पूरा डोमेन पूरा पर्टिकुलरली डोमेन ऊपर थी जमी साइंस एंड टेक्नो कि छोटे आसीगला ओके लेट्स से आपनकर आसिला 5G टेक्नोलॉजी द फ्यूचर सो जी जानी 5G टेक्नोलॉजी आ ऊपर 20-30 पेज लिखिबे केमती इफ यू नो द डिटेल्स एंड टेक्निकल डिटेल्स देन ओनली यू विल ठीक अछि किंबा आपण फॉरेस्ट्री स्टूडेंट आपण फॉरेस्ट ऊपर कोन ओटे आसीगला ओके व्हिच कैन नॉट बी रिटन बाय एनीवन समस्त सेटा anyone and everyone cannot write it okay you have the domain knowledge that's why you are choosing that subject तो सेमिति subjects topics भी आसे आउ किछटा topics आसे जोटा reflective topics तोटा metaphor थी बोलेडा ठीक अछि history repeats itself but geography does not ए टाइप रो किछ ओटे तो प्रथम पढ़ला आपण किछ बुझी पारियोनी कोन एटा लिखाई छि जदी न बुझी पाउछन metaphor टा कैच करि पारनांती एक्चुअली ता इनर मीनिंग टा कैच करना सेमिति सब्जेक्ट छाड़ देबे ओके बट इफ यू are able to understand that then attempt UPSC रे तो गोटे सेमती पढुची गोटे बेसिक जिंस से टाइप रो ये you have to give a lot of examples okay illustrations would पढियो I mean we are starting from easy topics then we'll graduate to more difficult and such kind of reflective topics बुझि पाले so तबरे आसंतु पेज नंबर 1 okay case of India last paragraph तो ये आसी वाला डेटा ओके पेज 1 रो 3/4 पेज खाली आपनकर कांसेप्ट बुझेला ओके तापर आसी गला आपनकर कोन ओनली डेटा ठीक अछि डेटाटा इंपोर्टेंट छाड़ देला बन सो गो थ्रू द डेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोन कहि छि ओके सब पूरा डिटेल्स डेटा दै छि आपन राइट सो गो थ्रू दैट व्हाट इज द what are the projections कि इंडिया रो डेमोग्राफिक डिविडेंड केमिति इंडिया को ओके बड़ अपॉर्चुनिटी गोटे दउची तापर आसीला थियोरीज ऑफ डेमोग्राफी वेरी इंपोर्टेंट एटा में जोना मेंस बैच इकोनॉमिक्स आपण पढिथिबे जो माने पढनांती जनरली ताको पढी के बुझंतु जदी डाउट होची पचारंतु सो इट टेल्स यू व्हाट इज द फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड द सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड ओके दैट इज बेसिकली और तापर आ गोटे थियोरी भी देला द Malthusian theory of population growth okay page number 3 right then in page number 4 it is giving you representation of the data bar graph देछि एबे मु आपन कहली किछटा फिगर्स कर परिबे ऑफ कोर्स यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू ए फिगर लाइक दिस ओके एटा आपन को बुझिया में देछि राइट प्रोजेक्शंस अप टू 2050 देछि सेटा राइट which it has देखो तुम कहल ना आपन जो सोर्स होबा कथा सोर्स हैज टू बी ए कॉमन सोर्स ओके ए रेस्पेक्टेबल सोर्स आपन एबे एबीसीडी जर्नल लिखिबे से जर्नल अछि कि नै कि जाने तो ओके एटा कोन होय ना लॉ परीक्षा रे जेतले साइटेशन द में पड़े केस रो तो पिला माने एमतिया साइटेशन दियंती ठीक अछि कि से जे खाता चेक करी से केबे सुन नथिबे फॉर एग्जांपल मु कहबी कि मोर खाता के गोटे देखी ओके गोटे पिलार अच्छे कि गोटे लिखी थे द रॉक वर्सेस अंडरटेकर ओके साइटेशन देछि लॉ रो रॉक वर्सेस अंडर WWE रॉक वर्सेस अंडरटेकर को गोटे ईयर रे को गोटे कोर्ट रो नाटा देतला ओके सो दैट इज बेसिकली खाता देखिए जब टाइम नथियो से देखिए अच्छे कोन गोटे तो लिखा तो ही दे दियो राइट सो सेमिति सोर्स रु कोटेशन दरकार नहीं अपन जो सोर्स यू सी द सोर्स हियर इट इज यूनाइटेड नेशंस
Okay, demographic transition and demographic dividends in developed and developing countries, United Nations. So the source is mentioned and it is a respectable source. किए भी सेटा भी ताको verify करि परिबे. Source has to be, should be verifiable. Okay, जल्दी जानी नाहंती data. Okay, ताहले छाड़ी दियंतु data दियंतु, but don't give wrong data. आजिकल जने evaluator से जदि particular थिबे बसिकी मोबाइल फोन रे भी बाहर कर दे पारिबे आउ सेही हिसाब रे आपण गोटे भूल एंटायरली आपण भलो लिखथिबे से गोटे भूल पे आपण गोटे नेगेटिव इंप्रेशन हेचु, राइट. देन थर्ड, फर्स्ट और सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्योरी टा देथिला, एबे पेज 5 रे देछि द थर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, सो इट एक्ट सच बी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यू शुड नो. फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड एवरीवन नोस, व्हाट इज द सेकंड एंड थर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड सेटा देछि. तापर आसला मेन पार्ट देखो आमर कौन एसेर हेडिंग टा देखो और एसेर टॉपिक टा देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. तो दीटा पार्ट को हमको लिखिया पड़िबो. अपॉर्चुनिटीज एठी सब देखि देलुन कि एआई हेले केते ग्रोथ होई परिबो, ठीक अछि. एबे आसिला चैलेंजेस रो पार्ट टा, डिबेट्स एंड फ्यूचर चैलेंजेस, राइट. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. सबटु बड़ चैलेंज हैला कोन ना स्किल डेवलपमेंट रो. डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी एते लोक सब अच्छा जो मैंने रेडी काम करने काम किए दब. व्हाइट कलर जॉब्स हो पारन. ओके, चाकरी तो हो पारन एते लोकों, ठीक अच्छे. ताले ये लोक सब कुआड़े जी. सो स्किल डेवलपमेंट, ओके, जोटा गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करने चेष्टा कर. कन्वर्शन फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब प्रोवाइडर्स, सेटा गोटे बड़ समस्त को स्किल डेवलप कराला. तापर गवर्नमेंट तक किसी सॉफ्ट लोन दब कि हेल्प करदब, सी निजर जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे. बिजनेस स्टार्ट कले से मैंने आउ 10 जन को भी एम्प्लॉयमेंट देवे, राइट. अदरवाइज जॉब क्रिएशन इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल विथ आवर पॉपुलेशन कि एमती आपणकर गवर्नमेंट कि प्राइवेट सेक्टर जोटा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एते जॉब्स केबे भी क्रिएट कर पारिबो. ओके, तेणु जहाँ भी हेले आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रो, ओके, नवाई ही पड़ो. सो सीटा से देछि. देन नेक्स्ट कम टू पेज 6, इंडिया स्टेटस. ओके, सो एथरे कौन आपन को पेज 6 एंड 7 रे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इवन इन डाटा कलेक्शन. ओके, आप तो डाटा दरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर डाटा हम पाखे बेसी नहीं, राइट. सो तापर आउ लॉट ऑफ अदर एनएसएस जो सर्विस गुड़ा होकर वेरियस राउंड्स. ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ देम से सब देछि सेटा तो थर थर ताको पढ़िबार अछि. ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस देन आपण कांसेप्ट बुझिले तापर ताको लिखिया पे चेष्टा करियो. ओके, ट्राई टू राइट द एसे एंड 7 days भीतर देखन शो इट टू मी बाय नेक्स्ट सैटरडे, ठीक अछि. एटा दरकार कहीं ना कहूनी कि एवरीडे गोटे गोटे एसे लिखंतु. 52 वीक्स रे 52 तो एसे लिखी हम ना. स्टार्ट फ्रॉम 1 hour एसेस 10टा खंडे 1 hour एसे लिखला परे आउ 10टा 2 hour एसे लिखिबे. बाकी 32टा आपण 3 hour एसे लिखिबे. 1 year प्रिपरेशन भीतर दिस इज क्वाइट आउट. 52टा एसे जी एक्चुअली लिखुची तो वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लिखिबे. सो टुडेज एसे वाज ऑन बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक अछि. इकोनॉमिक्स ऊपर थिला टॉपिक ता. तो नेक्स्ट सैटरडे दिन let us start with let us have a topic on polity, ठीक अछि. कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, ओके, ता ऊपर देखिबा एंड स्लोली टिके हमर जतले 5-6टा टॉपिक्स हे जिवो देन वी विल गो टू द रिफ्लेक्टिव एसेस. बुझिबल. So you write it and show it to me next Saturday.